Hi friends, welcome to English Study Point. Today here in this video lecture I am going to discuss with you about black humor. So this is a kind of literary technique as well as a device in which writer by using such kind of literary device or technique he is able to showcase something very serious in a light-hearted manner. So by use of such kind of literary device we are also able to discuss taboo topics. Taboo topics are those kind of topics about which we are not able to discuss in front of audience openly. So these are taboo topics, but by using such kind of literary device we are able to discuss about taboo topics as well as something serious things or issues in a very light-hearted manner or in a humorous manner. This is called as black humor. So it is a literary device that is used in all forms of literature in order to discuss taboo topics as well as serious issues in a less distressing way, treating or as if I explain this black humor, this device in a layman terms, it means that treating something serious in a light-hearted manner. So this is called as black humor. Now it acts as a kind of tool for writers through which they are able to explore serious issues. So black humor also acts as a kind of tool for writers. By use of such kind of literary device as well as technique they are able to showcase or explore something which is very serious in a very light-hearted manner or in a humorous way. Suppose if I am citing some examples in front of you, if I am talking about accident and not alone but with group of so many friends. So my friends are laughing when I am discussing about accident. So they are taking this term or this word accident as a fun. So this is a kind of accident is a kind of very serious topic and my friends are taking this subject as very humorous. So this acts as black humor. So a person or group of people laughing about the absurdity of an accident, this is a fine example of black humor. And another example is that whenever I am discussing with my group of friends about death, so they are also taking death in a humorous as well as outrageous way. So this is also a kind of black humor because they are my friends are taking death as not very serious. Now let's discuss about this term in a more elaborative way. So this term was coined by the surrealist theorist whose name is Andrew Breton in 1935 for his book Anthology of Black Humor. So please remember this. From where does this particular term which is black humor originate? This term originate or coined by Andre Breton in his book that is Anthology of Black Humor. So black comedy is called as dark comedy or gallows comedy. We attribute this device black humor also with dark comedy or gallows comedy. Gallows signifies something which is very serious. Gallows itself means a person who is hanged. So this deals with a very serious topic, but expressing this very serious topic in a very light manner is called as black humor. That is why we attribute this technique also as dark comedy or gallows comedy. So as I have already said in the beginning of this video lecture that black comedy also attributed as dark humor is the kind of comedy. So it is a kind of comedy that presents something which is very serious in a light-hearted manner. Like I have already given you example that my group of friends are talking about death and they are taking death in a
non-serious or not so serious manner, as well as they are taking this word in a very humorous as well as outrageous way. So this is a fine example that fits with the definition of this particular term, that is black humor. Humor's way of treating something that is serious. So it is a kind of humor about which we are able to treat, or about which, by use of such kind of literary device as well as this term, writer is able to treat something which is very serious in a humorous way. Then, so it is a kind of literary device used in novels as well as plays to discuss about taboo subjects. Taboo subjects are those subjects about which we are not able to discuss these subjects in front of audience openly, and while adding an element of comedy. Also, while I am discussing about these subjects, that is called as taboo subjects in my works, and I am adding something fun element while discussing taboo subjects, so this is also fits with definition of black humor. Like for example, if I am talking about rape assault, so if I am adding something fun element while discussing about rape assault, so this is also attributed as black humor, because I am adding something comic while discussing about these kind of taboo subjects. Then, black humor is a technique which tries to showcase non-serious way of treating or dealing with subjects, and this the term is used for the issues related to vulgar themes. So by using such kind of literary device, we are able to associate something which is very vulgar, or a writer, if he's able to talk about vulgar themes in his works, then he use such kind of literary device so that he indirectly talk about these taboo subjects through his work. So the term is used for the issues related to vulgar themes that are put in an amusing way. So by use of such kind of literary device, we are able to talk about vulgar themes in a very entertaining way before the audience. And also, we attribute this black humor as a dramatic genre that is used for the subjects that are not good or comfortable to discuss, or even considered a taboo in society. And by use of such kind of literary device, we are able to showcase that it acts as a kind of hiatus or pause for the audience after a heavy dose of confrontation of back to back serious incidents, and as well as it we can also attribute this black humor as a kind of comic relief. Why it is also attributed as a kind of comic relief? Because it provides something, a kind of relaxation to audience whenever if they confront with serious events one after another. So it provides them a sort of relaxation. That is why it is also, we attribute this black humor as similar to comic relief, and it gives audience a chance to experience laughter and discomfort at the same time. So writer use this kind of literary device as well as technique also to give audience a chance to experience both emotions, such as laughter as well as discomfort at the same time. And it means to end the tragic seriousness of the previous scenes or incidents. It makes the same subject or topic, the or incident, a bit lighter than it is. So that is why such literary device or technique used by writers, because it makes the same subject or topic or incident a bit lighter than it is. Now, main themes included while using such kind of literary device is
we are able to showcase or explore serious issues such as of death as well as of violence, discrimination, disease, as well as we talk about human sexuality by using black humor. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ हिएटस। हिएटस का मतलब है यहाँ पर एक तरीके का पॉज प्रोवाइड करने का काम करता है कि राइटर्स सॉरी जब भी ऑडियंस बार बार एक के बाद एक ट्रेजिक इंसिडेंट्स को कन्फ्रंट करती है वर्क्स के थ्रू या फिर किसी भी ड्रामास के थ्रू, वो एक के बाद एक सीरियस इवेंट्स को देखते हुए नज़र आते हैं, तो उन्हें पॉज चाहिए होता है। तो वो पॉज ब्लैक ह्यूमर का यूज़ करके ऑडियंस को प्रोवाइड किया जाता है ताकि इससे उनको राहत मिल सके, एक कॉमिक रिलीफ मिल सके, किसी चीज़ को किसी सीरियस चीज़ को नॉन ह्यूमरस या फिर लाइट वे में पोर्ट्रे करके दिखाया जा सके, humorous way में. So it is a type of hiatus or pause for the audience after a heavy dose of tragic or serious incidents and similar to comic relief. While using this technique, writers given chance to experience laughter and discomfort at the same time. Then अब ब्लैक ह्यूमर का कोई राइटर इस पर्टिकुलर लिटरेरी डिवाइस या टेक्निक का क्यों यूज़ करता है, क्योंकि इसके थ्रू ऑडियंस को एंटरटेन किया जा सकता है। अगर मैं रेप असॉल्ट के बारे में भी बात कर रही हूँ अपनी राइटिंग्स के थ्रू, तो मैं उसमें कुछ फ़न एलिमेंट ऐड कर दूँगी, तो इससे क्या होगा, ऑडियंस मेरी इस सीरियस टॉपिक से या फिर सीरियस इशू जिसको मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी राइटिंग्स के थ्रू, तो क्या होगा, ब्लैक ह्यूमर का यूज़ करके चीज़ें और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाएगी, लोगों को एक तरीके का अम्यूज़मेंट प्रोवाइड हो पाएगा, वो अपने आप को अम्यूज़ कर पाएंगे। देन आउटरीच एंड कैप्चर अ रीडर्स अटेंशन। अगर मैं रेप असॉल्ट जैसी चीज़ को ह्यूमरस वे के साथ पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हूँ, तो राइटर्स जितने भी ऑडियंस हैं, तो वो इस चीज़ उनका जो है इस चीज़ पर ध्यान जाएगा कि मैं इतने सीरियस टॉपिक को ह्यूमरस वे में पोर्ट्रे कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जितने भी ऑडियंस मेरे इस राइटिंग को से इंस्पायर हो रही हैं, उन्हें पढ़ रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होने के साथ साथ उनके जब वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे तो उनकी अटेंशन जाएगी और वो ये सोचेंगे कि मैं एज अ राइटर होकर इतने सीरियस सब्जेक्ट को इतने ह्यूमरस वे के साथ पोर्ट्रे कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा, अटेंशन ग्रैब हो पाएगी, मेरे टॉपिक की अटेंशन ऑडियंस ग्रैब कर पाएंगे। देन give the audience a break from the serious subject matter, as similar to comic relief in which everyone is allowed to cool down and relax their minds away from the subject of a tragedy. तो मैंने इस चीज़ को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। By using technique, a writer can juxtapose morbid और घासली elements. तो यहाँ पर morbid और घासली elements वो elements होते हैं, तो घासली एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा भयंकर हो, भयानक हो, एंड मॉर्बिड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि चीज़ों को डिसीज़्ड यानी एक करेक्टर को प्रेजेंट करके उसे डिसीज़्ड वे के साथ दिखाना कि उसकी कंडीशन काफ़ी इल है, वो काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ से घिरा हुआ है। मॉर्बिड का मतलब ही जो बहुत ज़्यादा इल हो गया हो, डिसीज़ हो गया हो, जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डिसीज़्ड हो चुकी हो। तो ऐसी टेक्निक का यूज़ करके हम एक करेक्टर को क्रिएट करके उस इन सब चीज़ों को दिखा सकते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा भयानक है एंड वो बहुत सारी डिसीज़ से जूझ रहा है। सो बाय यूजिंग दिस टेक्निक अ राइटर कैन जक्सटापोज मॉर्बिड और घासली एलिमेंट्स विद कॉमिकल वंस। तो अगर मैं HIV एड्स के बारे में डिस्कस करती हूँ एंड उसमें मैं कुछ फ़न एलिमेंट ऐड ऑन कर देती हूँ, तो इससे क्या होगा, अब ह्यूमरस वे के साथ इतनी भयंकर बीमारी को शोकेस करने की कोशिश करती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है ब्लैक ह्यूमर का। वन दैट रिड्यूस द सेंसलेसनेस और फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ। तो इसके थ्रू क्या हो पाएगा, सबसे पहले अगर राइटर मॉर्बिड और घासली एलिमेंट्स को अपने वर्क्स के थ्रू शोकेस करना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ की फ्यूटिलिटी को भी इन्हीं एलिमेंट्स को शोकेस करके बताना चाहता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल फ्यूटाइल है, हम कुछ टाइम के लिए इस
धरती पर मेहमान बनकर आए हैं एंड कुछ टाइम बाद हमें इस धरती से वैनिश हो जाना है। तो राइटर्स इस चीज़ को का मैसेज देने की कोशिश करते हैं इन एलिमेंट्स को दिखा करके। बट अगर राइटर इन सब एलिमेंट्स को पोर्ट्रे करते समय ब्लैक ह्यूमर का यूज़ करता है, तो वो कहीं ना कहीं फ़न एलिमेंट या फिर कुछ कॉमिक एलिमेंट ऐड ऑन करता है, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हमारी लाइफ फ्यूटाइल नहीं है। जो लोग हमारी इस लाइफ को फ्यूटाइल समझते हैं कि लाइफ का एग्जिस्टेंस बिल्कुल फ्यूटाइल है, हमारे एफर्ट्स बिल्कुल फ्यूटाइल है एंड हमारी लाइफ बिल्कुल सेंसलेस है, वो इस बेसिस पे समझते हैं क्योंकि एक टाइम बाद हमारी डेथ हो जानी है। बट इस एलिमेंट का यूज़ करके हम ये अश्योरेंस ऑडियंस को प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, लाइफ में अगर हम आए हैं तो हमारी लाइफ फ्यूटाइल नहीं है। हम अपनी लाइफ को, जो कि कुछ दिन की है, उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, अपने आप को अम्यूज़ कर सकते हैं ऐसे कॉमिक एलिमेंट्स का यूज़ करके। देन the writers uses farce and low comedy especially to make clear that individuals are helpless victims of fate and character. Yes, राइटर्स फार्स या फिर लो कॉमेडी का इसलिए यूज़ करता है क्योंकि वो ऑडियंस और रीडर्स को मैसेज पहुंचाना चाहता है कि इंडिविजुअल्स बिल्कुल हेल्पलेस है, वो कहीं ना कहीं फेट के शिकार हैं। फेट यानी अपनी डेस्टिनिटी, यानी जो भी उनकी लाइफ में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उन्हें वो उसी चीज़ के विक्टिम हैं, वो उन्हें एक ना एक दिन फेस करनी होगी। जो भी उनकी लाइफ में या फिर जो भी उनकी जितने भी वो कर्मास कर रहे हैं, तो वो ये उनकी मर्ज़ी से नहीं हो रहे, वो सारे एक पपेट्स की तरह है, वो स्केप गॉड्स हैं, उन्हें भगवान के इशारों पर चलना पड़ता है एंड इसी वे में वो कहीं ना कहीं अपने फेट के विक्टिम्स हैं। अगर वो किसी चीज़ से बचना भी चाहते हैं तो वो बच के निकल नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ डेस्टिन्ड हुआ होता है। अगर कोई इंसान मरने से बचना चाहता है तो वो नहीं बच सकता, क्योंकि उसे एक ना एक दिन तो डेथ फेस करनी ही पड़ेगी। So by using this technique, a writer can juxtapose morbid as well as ghastly elements with comical ones that reduce the senselessness or futility of life. तो इसके थ्रू लाइफ की फ्यूटिलिटी या फिर सेंसलेसनेस को इसके थ्रू यूज़ करके और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है एंड ये मैसेज प्रोवाइड किया जा सकता है कि अगर हमारी लाइफ बहुत शॉर्ट टाइम की है तो हम उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपने लिए ऐसे कॉमिकल एलिमेंट्स का यूज़ करके। देन द राइटर यूजेस फार्स एंड लो कॉमेडी स्पेशली टू मेक क्लियर दैट इंडिविजुअल्स आर हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ फेट एज वेल एज करेक्टर। देन Black humor provides an interpretation of the writings of Jonathan Swift. तो ब्लैक ह्यूमर हमें हेल्प करता है जोनेथन स्विफ्ट की राइटिंग्स को इंटरप्रेट करने में, विद द पर्पस टू आइडेंटिफाई सम ऑफ स्विफ्ट्स राइटिंग्स एज अ सब जॉनरा ऑफ कॉमेडी। तो हम देखते हैं कि जो जोनेथन स्विफ्ट की राइटिंग्स हैं उनमें से कुछ राइटिंग्स एज अ सब जॉनरा की तरह है, कॉमेडी का सब जॉनरा है या फिर सटायर का सब जॉनरा है, जिसमें लॉटर तब अराइज होकर आता है जब वो स्केप्टिसिज्म की बात करते हैं। स्केप्टिसिज्म का यहाँ पे मतलब है जोनेथन स्विफ्ट अपने वर्क्स के थ्रू लोगों के स्केप्टिसिज्म के बारे में ज़्यादा शोकेस करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का ह्यूमरस वे है चीज़ों को बताने का, कि लोगों को लोगों पर ही विश्वास नहीं रहा है। स्केप्टिसिज्म इज़ मोर रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ वेरी डाउटफुल एंड साइनिसिज्म का मतलब है जो लोग बहुत ज़्यादा संकी होते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी कभार लोग जब संकी होते हैं, अजीब अजीब स्ट्रेंज चीज़ें करते हैं, तो सामने वाला हंसने लगता है उसके इस स्ट्रेंज बिहेवियर को देख के। तो कहीं ना कहीं ब्लैक ह्यूमर एक तरीके से जोनेथन स्विफ्ट की राइटिंग्स को इंटरप्रेट करने में भी हेल्पफुल है। देन कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, जैसे दे आर ट्राइंग टू किल मी, यूसेरियन टोल्ड हिम काल्मली, नो वंस ट्राइंग टू किल यू, Clavinger cried. Then why are they shooting at me? Yossarian asked. They are shooting at me, Clavinger answered. They are trying to kill everyone, and what difference does that make? So these lines are taken from Joseph Haller works, which is
Catch 22. Let me explain this to you. Here, protagonist Yossarian is expressing his fears to his friend. He thinks that everyone intends to kill him, while Clevenger takes it in a very light way, implying death is something on the war front. To him, death is an accepted reality. Uh, to to Clevenger, death is somewhat of a kind of an accepted reality during the time of wars, so it should not be taken seriously according to Clevenger. While Yossarian is treating death as a very serious kind of subject. And also Clevenger tries to suggest that they are not specifically trying to kill Yossarian but everyone. So enemies here not trying to only kill Yossarian, but enemies are trying to kill all the people who are uh, revolting against that particular army that is opposite to the army of Yossarian. And also there is another example which is a very good example of black humor, that is here these are some dialogues which is present in the work called as Waiting for Godot. So these dialogues are spoken by two characters from the work Waiting for Godot, which is a work by Samuel Beckett. Here, these two characters, whose name is Astragon as well as Vladimir, they are talking about the Godot whom they are waiting for very few time, and these lines showcase that this wait never allows them to go for independent choices. They are only kept on waiting and waiting only for the sake of this person whose name is Godot. This work of waiting never allows them to go for independent choices. Vladimir is so promising that he does not want to move until he meets Godot, and that is this waiting is a kind of hindrance that doesn't allow these two characters to go further or to progress further in life. This act of waiting is is somewhat a kind of hindrance to both these characters. And with this particular video lecture ends here. Hope this video lecture will help you in your UGC net English literature exams. Thank you.